Good morning everyone. I am Soumyakanta Sabu, a lecturer in civil engineering from Government Polytechnic Jagatsinghpur. Today I am going to start a topic on the geotechnical engineering. Let's discuss about the basic terminology and interrelations. The first topic. So this geotechnical engineering is all about the soil. What are the forces? What are the components? And how the soil behaves under different forces. All these we have to in the from upcoming videos we will see. The first term is soil mass. So first of all, what is a soil mass? We can see that a soil mass is a combination of soil particles forming a porous structure. Porous structure means the structure which is having the pores. So आम जो भी सॉइल को आम देखुवा सॉइल आम देखी कि सॉइल जोटा आम देखुचे दो जो सॉइल पार्टिकल्स जो जिन आम माटी देखुचे सॉइल पार्टिकल्स आम देखुचे सॉइल भितर देयर इज हैविंग द पोर्स और गैप्स से गैप्स को आम कहीपर वॉइड्स. तो सॉइल जो पार्टिकल आमको देखा जाए दोज आर सॉइल सॉलिड्स एंड द गैप्स दोज आर कॉल्ड द वॉइड्स. So here it is written the soil particles in the soil mass is called soil solids and the gaps that is called the voids. We can denote the soil solids and the voids by a diagram. That diagram is known as phase diagram. So this is one example of phase diagram. So how do we get this phase diagram? We know we have soil solids. See this. This is a phase diagram. Or first of all, see this picture. So this is originally the soil. It is the total mineral skeleton of the soil. Here you can see the brown particles. Those are called soil solids, and these are the white. These are the voids. In this white region, the gas region, we have liquid which is denoted in the blue color, and the gas which is denoted in the white color. So in the phase diagram हम कहा पूछे ना ये जिनस को सब सॉलिड को जब सेपरेट करके गोटे पट को नहीं आसबे सेटा हमर सॉइल सॉलिड से जाउची. एंड सब सॉलिड को सेपरेट कर दोची गोटे पाखो को नहीं आसबे सेटा हमर सॉइल सॉलिड से जीवो. जो पानी गुडा আছে वाटर गुडा আছে ताको भी जब गोटे सेपरेट रखी दोची सेटा हमर वाटर हे जाउची. एंड बाकी जो व्हाइट स्पेसेस खाली बची गला ताको भी गोटा हम एयर रे रिप्रेजेंट कर पाछे. तो दिस इज द फेज डायग्राम ऑफ द सॉइल. फेज डायग्राम रो तीनटा कंपोनेंट मेनली रही पड़छे सॉलिड्स, वाटर एंड एयर. सो वी कैन इन द फर्दर स्लाइड्स वी कैन सी वी कैन हैव थ्री फेज डायग्राम एंड टू फेज डायग्राम. सो सॉलिड्स, वाटर एंड एयर ए हिसाब रे फर्स्ट ऑफ ऑल रॉइस कोन पाए ना त डेंसिटी हिसाब रे जहार डेंसिटी अधिक रहउची आमे ताको सभा तळे बनउचे जहार डेंसिटी टिके कम वाटर टिके कम अछि सेरा टिके ऊपर एंड एयर डेंसिटी बहुत कम अछि सेटा ता ऊपर बनउचे. इट इज लाइक द डेंसिटी हिसाब रे हम समझै छै. नेक्स्ट, सो दिस इज द आल्सो द फेज डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉलिड्स माने को सेपरेटली शो करछि सेटा होय सॉइल सॉलिड्स. voids को जोटा सेपरेटली शो करछि दैट इज voids. तो ये जो voids आर जो फ्री स्पेसेस, इन द फ्री स्पेसेस we have water, amar water भी रही पाछे and air भी रही पाछे. So see this, this is the phase diagram or three phase diagram. सभा तळे एनु कल सबुठ अधिक डेंसिटी सॉलिड्स रे रहउची तो सॉइल सॉलिड्स मु एई जगह रिप्रेजेंट करि करूची. नेक्स्ट ता ऊपर मोर वाटर रही माने लेट दिस इज void. तो ये void को दीटा पार्ट रे डिवाइड करि परबे. फर्स्ट पार्ट वाटर हे परिबो, सेकंड पार्ट मोर एयर हे परिबो. सो एबे हम देखिया जे सॉइल सॉलिड्स जति की भी वॉल्यूम नै छै जति की भी जगह नै छै रहिया पाई गोटे सॉइल रे जति भी जगह नै छै दैट इज डिनोटेड इन द VS. दिस पार्ट इज द वॉल्यूम और स्पेस रिक्वायर्ड बाय द सॉइल सॉलिड्स. अब void जति भी गैप रहउची जति भी जगह नै छै रहिया पाई से जगह को कहि परिबे दैट इज डिनोटेड बाय द VV, दैट इज वॉल्यूम ऑफ voids. सेम हिसाब रे सॉइल सॉलिड्स तर जितने ओजन हो जितने वेट रोचे
और जति कि मास होउची ताको हम डिनोट कर पाइया ms जति मो मास ऑफ सॉलिड्स होउची और ws जति मो वेट ऑफ सॉलिड्स होउची एग्जैक्टली से हिसाब में वॉइड्स को माने डिनोट कर पाइबे mass of the void, but one thing that is important here, in the voids we know that we have two components, one is water and one is air, but we know that the mass of air is negligible. Air में जो mass होता है तो directly this mass of void is directly equals to mass of water or weight of water. ठीक है, हमें जान चाहिए air space नहो तो we can have the volume of air that is VA, but we know that mass of air is negligible, so ma mass of air is 0. We can have volume जति की जगह नहोची रहिया पे माने water जति की जगह नहोची रहिया पे, that is the volume of water. soil solids जति की जगह नहोची रहिया पे, that is vs. So हमें जानी थी कि volume of void is the combination of volume of air and volume of water, that is written over here. Okay, so we can see the denotations dv, va, vw and vs. So this is the phase diagram what I have explained just now. तो हमारा दी प्रकार phase diagram ले पाइबो, गोटे 3 phase diagram and 2 phase diagram. मेनली हमें देखि परछे जदि तीनटा कंपोनेंट अछि सॉइल रो तो दैट इज 3 phase diagram, एंड जदि दुईटा कंपोनेंट अछि सॉइल रो दैट इज 2 phase diagram. तो तीनटा कंपोनेंट्स कोन कोन हम ऑलरेडी देखिले, सॉइल सॉलिड्स अछि, वाटर अछि एंड एयर अछि. दुईटा कंपोनेंट्स रे सॉइल सॉलिड्स होछि, वाटर रहि पाइबो, आइदर वाटर रहि पाइबो और सॉइल सॉलिड्स एयर रहि पाइबो. को जिंस होछि एडिट के देखो, जदि सॉइल एटा तर नेचुरल स्टेट रहछि, लेट ए सॉइल को नोछि ओवन रे हीट कर दोछि. जतोड़ मु सॉइल को ओवन रे हीट कर दोछि तो जति की भी सी सॉइल रे वाटर पार्टिकल्स में जति की वाटर थिबे जागा जति की वाटर थिबे तो मु जानि छी ओवन रे हीट कर देले दिस वाटर विल गेट इवापोरेटेड. तो सेही जगहटा से जो गैपटा से गैप रे मोर डायरेक्टली एयर अछि. तो दिस फेज डायग्राम विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस ड्राई सॉइल. ड्राई सॉइल रे ना एबे कोन अछि ना हमर सॉइल सॉलिड्स रहला एंड जब पूरा ड्राई हो गला तो से वॉइड्स रे हमर पूरा एयर रहला. दैट सॉइल इज नोन एज ड्राई सॉइल. आ गोटे सॉइल अछि हमर जदी इन केस कहले ए सॉइल को पूरा सैचुरेट कर देली माने यार ऊपर और पानी न पकेली जेमति कि ए एयर पोर्शन रे मोर पानीटा फिल अप हो गला, जति कि एयर थला सेति कि पोर्शन रे भी मोर वाटरटा फिल अप हो गला. तो कोन ए होती जगह रे ना से एयर जगह रे एबे मोर कोन रह गला टोटल वाटर इज ऑक्युपाइड इन दिस पार्ट. तो एबे टोटल voids which get converted into volume of water. गोटे कथा एठी हम टिके ध्यान देबा, एबे even if the volume of air is 0 or volume of water is 0, जतोड़ मु ड्राई कर दोछि वॉल्यूम ऑफ वाटर टा 0 हो जाउछि, जतोड़ फुल पानी हो जाउछि ए जगह रे भी हो जाउछि सेटा वॉल्यूम ऑफ एयर टा ए जगह रे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर टा 0 हो जाउछि, टोटल टा वॉल्यूम ऑफ वाटर टा हो जाउछि. गोटे कथा माने एठी हम ध्यान देबा दरकार कि टोटल वॉल्यूम that is comprising of the volume of solids, volume of water and volume of air, that total volume is constant. Up to this chapter the total volume is constant. तो हमें पूरा ड्राई कर देले भी यार टोटल वॉल्यूम चेंज होबनी, एटा 0 रहइबो. अब फुल्ली सैचुरेटेड कर देला टोटल पानी भी टोटल जगह हे गले the volume will same, the total volume will not change. We know that the total volume is the combination of volume of solids plus volume of voids. So this is the two phase diagram. तो two phase diagram जो थरे solids and water only अछि ता से सॉइल को हमें कया fully saturated soil. जो phase diagram two phase diagram रे only solid और air अछि ताको हमें कहि परिया dry soil. So see this, ए जो हम डिस्कस करले जस्ट fully saturated रे हमरा void रे only water अछि and dry soil रे void रे only air अछि. So these are the terms used or symbols used for denoting different voids and different voids. As you can see, this is the total volume. Total volume is Vs plus Vw plus Va, and this Vw plus Va is the volume of void Vv. And this is the total weight of the soil,
total weight is comprising of only weight of soil solids plus weight of water. Okay. Next, these are the basic formulas what we have discussed in the above. One thing, it is very important to know that the volume of soil solids, the VS, the volume of soil solids, that is VS, and the weight of soil solids, WS or MS, it is always constant. It is not changing, neither changing in the dry condition, not changing in the fully saturated condition. It is always constant. There is definition we are having in this chapter. First of all, the definition is void ratio. Void ratio is denoted by the symbol E. Void ratio basically says VV divided by VS. VS is volume of voids, VS is volume of soil solids. So we can define it as, it is defined as the ratio of volume of voids to the volume of solids. We can see this is a dimensional quantity, as in the numerator and denominator we are having the volume, the same quantities. All will get cancelled, so this is unitless. And the range of void ratio is 0 to infinity. As we can know, the volume of void can be greater than volume of solids. The space occupied by the volume of voids जितनी भी space होगी सेटा solids को यदि अधिक होगा तो सेटा 1 to अधिक हो पारे, and that will maximum value can be up to infinity, and the 0 cannot be value 0. The value of void ratio can never be 0, because what a soil our void can be 0 ही करेगा. Void ratio भी 0 होगा बोले volume of voids have to be 0, that is not possible. What a soil जो ना उसे ताकि तेरे voids रहेगा and solids रहेगा, both have to be compulsorily present. Next definition is porosity. Porosity is defined as, porosity is first of all denoted by the symbol small n. Small n, it is defined as the ratio of volume of voids by total volume. Total volume, we know that in the total volume we have the volume of solids plus volume of voids. So we can see this fraction can never be greater than 1, as the denominator will be always greater than the numerator. So this fraction can never be greater than 1. ये ताले यार range अपन mainly 0 to 1. The 0 and 1 both are excluded. It is we can also see this is a dimensional quantity, as in both numerator and denominator we are having volume, same units. Next definition is degree of saturation, which is denoted by SR. SR द्वारा हमें denote करी करो. तो simply एटा कौन होची ना? Let this is the phase diagram, simple phase diagram. This is solids, soil solids. This is water. This is air. So degree of saturation is denoted by the term SR. SR says degree of saturation is, it is the ratio of this one. This is, we know that this is the volume of water, and this total volume is the volume of voids. So degree of saturation is this quantity, volume of water all divided by volume of voids. Here also you can see that the denominator volume of voids it is always greater than or equals to the volume of water. इस जगह पे हमारा total range 0 to 1 एक both are included here. SR value first of all आप देखिए 0 के तोड़ होगी ना, जो हमें जाने चाहिए जितना ये fraction रो numerator टा हमारे 0 ही जाऊँगी. तो ये थोड़ा हमें देखो जो कि volume of water टा हमारे थोड़ा 0 ही जाऊँगी, तो ये fraction SR value 0 ही. तो volume of water टा 0 के तोड़ हमें जाने चाहिए जितना हमारे soil dry है, जितना soil टा हमारे dry होगी जितना volume of water टा हमारे 0 ही जाऊँगी. तो at that time the SR value is 0. This is for only dry soil. जितना बड़े हमारे total voids है, ये जो total voids में देखो जो total voids देती है इस total void में यदि पूरा पानी अच्छे पूरा water अच्छे तो same time रे ये volume of void will be equal to the volume of water.
ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ SR ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ ସେମ୍ 1 ହେଇଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା both the numerator and denominator are equal ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋର SR value 1 ହେଇଯିବ or that is also 100% it is for the fully saturated soil ଯେତେବେଳେ void formally ପାଣି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର SR value 1 ହେଇଯିବ this is also dimensional quantity it can be written in the percentage or in the decimal fractions next similar to the degree of saturation we have another air content in the degree of saturation we have volume of water by volume of voids here we have volume of air by volume of voids so this is air content is defined as the ratio of volume of air to the volume of voids one thing we can see SR plus AC will always be 1 as SR is volume of water by volume of voids and AC will be volume of air by volume of voids. So the LCM is VV, then numerator will be VW plus VA, which is also equals to VV. So this value, जदि हमको किसी भी देती हो air content देती हो, की degree of saturation देती हो, तो हमें by subtracting it from the one value, one तो हम subtract करेंगे मु AC मार्क करेंगे, और SR मार्क करेंगे. AC is 1 minus SR and SR is 1 minus AC. The next term is percentage of air voids जहाँ को हम represent करते हैं NA द्वारा तो it is defined as the ratio of volume of air to the total volume या air content रे हमारे थिला volume of air to the volume of voids इस जगह volume of air to the total volume is comprising of volume of solids plus volume of voids it is also expressed in the percentage next जति भी हम definition ऊपर देखिले mainly all are related to the volumes but here it changes to the weight form so water content is represented by small w it is defined as the ratio of weight of water it is denoted by small w it is written as weight of water to the weight of solids in the percentage wise we can multiply it with 100% एटा भी हमें जानि पड़छ जेतु न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दी आटे हमर वेट कंपोनेंट रहउछ तो दिस इज आल्सो डायमेंशनल क्वांटिटी it can also be written as mass of water by mass of solid same thing we know that to convert it into weight this is equals to mass of water into acceleration due to gravity this is mass of solid into acceleration due to gravity both can get cancelled to give the same answer okay the next we have various densities first of all unit weight and densities one simple difference between unit weight and density is that हमें unit weight रे कौन करूँ unit weight रे हमें जाने चाहिए density previous class में हमें जाने चाहिए density is simply defined as it's the ratio of mass by volume एटा हमें density कोई करेगा unit weight simple change होगा mass जगह हमें जो weight को रख दो जो weight by volume सेटा हमारा density है तो first density मोर ये होची unit weight of water that can be defined as unit weight symbol mainly gamma रोची और यदि water को होचे तो subscript w same thing यदि मो density of water लेके जाऊँ that can be written as rho is the symbol of density for water rho w ताहेले gamma w मोर कोन हे जाउची ना this is the weight of water divided by volume of water density of water is represented as mass of water divided by volume of water तो mass of water by volume of water जब लिखुचे तो यार यूनिट हमें जब जाने चाहिए weight रे mass रे यूनिट kg ही परिबो volume रे यूनिट मीटर क्यूब ही परिबो so one of the unit can be kg per meter cube आगो यूनिट जो हमें देखिया mass रे यूनिट ग्राम ही परिबो volume रे यूनिट सेंटीमीटर क्यूब ही परिबो so this can be another unit for the weight वो weight भी रहने चाहिए weight को हमें denote करी पड़ेगा न्यूटन और किलोन्यूटन let weight is denoted in the kilonewton volume को हम denote करी पड़ेगा मीटर क्यूब so density रा unit
kg per meter cube and gram per centimeter cube हे परिबो unit weight रे unit kilo newton per meter cube. So in the unit weight of water, it is weight of water by volume of water, and this is the same mass of water by volume of water. One thing we have to always remember this formula or this value, weight of water. These are the standard values. The weight of water is 1 gram per centimeter cube, or it can also be 1000 kg per meter cube, also 9810 newton per meter cube, or that is 9.81 kilonewton per meter cube. We know that 1 kilonewton is 1000 newtons. So all are same. We have to remember this densities and the unit weights. The next unit weight is, it is rho, the symbol RHO. Bulk unit weight or bulk density. So the previous definition was about हमें वाटर डेंसिटी जानले कि वाटर unit weight जानले. एबे हम सॉइल रो डेंसिटी ऊपर किछ देखिया. तो the first density, that is the bulk unit weight or bulk density. जहाँ सिंबल नहीं परिबो हमर bulk unit weight जतो को जेता सिंबल गामा ही परिबो, जतो bulk density को जेता सिंबल रो ही परिबो. So unit weight is defined as weight of soil divided by the total volume. Weight of soil, sorry, the weight of soil is not represented like this. Sorry, the weight of soil is denoted by capital W, and the volume is V. So weight, we know that the weight comprises of weight of solid plus weight of water, and the total volume V is volume of solid plus volume of water plus volume of air. This is volume of water. So the unit weight or bulk unit weight of soil is defined as the weight of soil mass to the total volume of soil mass. The unit is same, kilogram per meter cube, kg per meter cube, gram per centimeter cube. Next is dry unit weight. एटा सॉइल रो जनरल डेफिनेशन थिला bulk unit weight. Bulk unit weight रे हम जानि नथिबा कि सॉइल टा पूरा ड्राई अछि कि पूरा सैचुरेटेड अछि. हमें जस्ट खाली एतिकी हम पाखे आईडिया अछि. सॉइल इट इज मेनली ऑफ द थ्री फेज डायग्राम, माने तीनटा कंपोनेंट हमर प्रेजेंट अछि. तीनटा कंपोनेंट हमर जे प्रेजेंट अछि सेटा हम bulk unit weight को रिप्रेजेंट करि परिया. जतो बडे ड्राई unit weight में कहि दोछि. ड्राई unit weight रे मेनली दीटा पार्ट रहउछि. One is soil solids and we जानिस कि void से only air है present थिबो. तो this is two phase diagram. यदि dry unit weight को हमें कहू छे, तो dry unit weight रो symbol और dry density symbol, dry unit weight is rho d and dry density is dry unit weight is gamma d, dry density is rho d. तो यात्रा कोन होची ना हमें जानि कि जो dry है soil टा ड्राई अछि, तो सॉइल ड्राई अछि माने हमर सॉइल रो वेट जदि हमें मेजरमेंट करिया, हमर ओनली द टोटल वेट इज ओनली वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स. जेतु यात्रे एआर थिबो ओनली, एआर ओजन नै, ओनली सॉइल वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अछि, एंड द वॉल्यूम इज द टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस द वॉल्यूम ऑफ एयर और द void. दिस इज द टोटल वॉल्यूम. This is W is to W. Only मैंने हमें जान लिया dry unit weight में only हमारा solid flow है, weight हमें measurement करते हैं as the weight of air is 0. Next definition. Saturated unit weight or saturated density. जेमती या पूर्वकटा dry density देला, एटा saturated अछि. This is also a two phase diagram. यार void रे only हमारा water अछि. या पूर्वक केस रे only air थिला, ये केस रे only water अछि. तो here the symbol is gamma sat, dry saturated unit weight, or rho sat, saturated density. तो यार इस सॉइल रो वेट केमती हे परिबो ना, हम जानि सैचुरेटेड रे हमर सॉइल फुली सैचुरेटेड अछि, हमर सॉलिड अछि एंड वाटर अछि. तो इट इज वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, एंड वॉल्यूम रे भी सेम अछि मोर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर. सेम कथा हम मास रे लिखि परिबे, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस
called the total volume, same total volume, and this is the total mass in case of saturated soil. All density is having the same unit, kilonewton per meter cube, or kg per density is having kg per meter cube, and or gram per, this is actually centimeter cube, gram per centimeter cube. Okay. Next one is submerged unit weight or submerged density. Submerged density is defined as the ratio of submerged weight by total volume. Submerged unit weight का मैं define इंग्लिश करी पहले. Saturated unit weight minus unit weight of water, or saturated density by minus density of water. The unit is same, kilonewton per centimeter. This is the last unit weight. The last unit weight is unit weight of soil solids, that is represented by the letter gamma s or rho f for density of soil solids. तो हमें जानी चाहिए सेम फेज डायग्राम है. दिस इज द सॉइल सॉलिड्स, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, दिस इज द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स WS. सो डेंसिटी इज सॉइल सॉलिड्स और डेंसिटी हम केमती कहि परिया ना, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, और यू कैन राइट इट एज गामा एस. डेंसिटी हम सिंपल लिखि परिया मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स, यार मास केते अछि अब यार ये कितने जगह रहै वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स. ठीक है. द नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमें लेटर कैपिटल G द्वारा, इंग्लिश लेटर कैपिटल G द्वारा रिप्रेजेंट करि पाउ छै. तो व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज, इट इज डिफाइंड एज द as density or unit weight of soil solids to the unit weight of or density of water. અને capital G को हमें रिप्रेजेंट करी पाउ छै. इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ये जो डेंसिटी हमें जस्ट या पूर्व डेफिनेशन का डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर. आल्सो इट कैन बी रिटन एज यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर. हमें जानि पड़छ जेहेतु सेम यूनिट ऊपर और तळे अछि, तो दिस इज यूनिटलेस. मेनली सॉइल रे यार रेंज 2.5 to 2.8 पाखापाखि আছে. फॉर डिफरेंट सॉइल वी हैव डिफरेंट G values. We have some last definitions, that is the specific gravity of soil mass, that is it is defined as the ratio of bulk unit weight of soil mass to the unit weight of water. या फुल डेफिनेशन